the order given by the public. So the mandate of an arbitrator, matlab the way he was appointed for a particular term, that mandate, it shall terminate, and uski jagah pe another arbitrator will be appointed if he becomes de jure. De jure means what? A particular right has been given to a person, loses that right. Particular authority has been given to that person, loses that authority. That is, he is unable to perform the functions given to him, unable to legally perform his duties which are given to him. Okay, so if he is unable to perform his function, or fails to act without undue delay due to some other reasons, okay, he is not able to act as an arbitrator for some reason, then his mandate will be terminated and in his place some other arbitrator will be appointed. Mandate is also terminated if he himself resigns from the arbitrator's position or the parties remove him from the arbitrator's position. Okay, so there are three things. One, he is not able to perform his function. Second, he fails to act as an arbitrator. That is, he is not able to give decision or carry on the hearing procedure. Third, he resigns from the office. Fourth, parties remove him from the position of arbitrator. So in all these cases, an arbitrator will be removed and uske jagah pe another arbitrator will be appointed. Okay, first paragraph is understood, everyone? Yes, ma'am. Okay. Further, if a controversy arises about an arbitrator's inability to function or occurrence of undue delay, a party may seek intervention of the court. So if a party feels ki, a certain arbitrator is unable to perform his functions or is unnecessarily delaying the process of arbitration, I can go to the court एंड आज द कोर्ट टू इंटरवीन. मतलब मैं कोर्ट से जाके बोल सकती हूँ कि आप अब इस मामले में इंटरफियर करो एंड यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज ऑन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर. Okay, so I can go to a court if at all I find that arbitrator is unable, but arbitral institution is supporting him, or arbitrator is unnecessarily delaying the case, but institution is not listening to what I have complained about, or is not uh, um, trying to अवॉइड दिस डिले. मतलब होता है ना, वो कभी कभी कोई पर्सन अगर जानबूझ के देरी कर रहा है कोई चीज करने में, तो हम अगर उसके बॉस को जाके बोलते हैं तो उसको डांट पड़ती है. तो आर्बिट्रेटर अगर जानबूझ के डिले कर रहा है और मैं जाके इंस्टीट्यूशन में कंप्लेन करती हूँ, तो इंस्टीट्यूशन उसको कुछ बोलता नहीं है. सो जब भी ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेटर इज अनेबल टू परफॉर्म फंक्शन और अननेसेसरी डिले कर रहा है, और इस बात को लेके कंट्रोवर्सी है, मैं बोल रही हूँ कर रहा है, इंस्टीट्यूशन बोल रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे कंट्रोवर्सी है, तो मैं जाके कोर्ट से बोल सकती हूँ कि आई फाइंड दिस रॉन्ग, नाउ यू इंटरवीन इन दिस केस एंड यू टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द टू लाइन्स mentioned in 14 subsection 2? Yes, ma'am. Okay. Okay. 14 subsection 3 says that according to subsection 3, if under section 14 or section 13 subsection 3, an arbitrator withdraws from his office or party agrees to terminate the mandate, it shall not imply acceptance of validity of any ground referred to in this section or subsection 3 of section 12. Now, suppose an arbitrator himself resigns from the office or parties remove him from the position. It does not mean that he is partial or he is not qualified, okay, or he has been delaying the case, और ही इज अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस. मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई खुद से रिजाइन करता है तो इन्हीं कारणों की वजह से कर रहा होगा. देयर मे बी सम अदर रीजंस आल्सो. It's not necessary that the reasons given in subsection 3, what were the reasons given in subsection 3, that impartial and not qualified, okay, and what are the reasons given here? De jure, de facto, fails to act without undue delay, okay. These reasons are not, मतलब अगर कोई खुद से रिजाइन कर रहा है मतलब ये कारण नहीं होंगे. There can be some other reasons only. So you also, you cannot always imply
यू कैन नॉट ऑलवेज, आप ये मानकर नहीं चल सकते कि वो अनएबल टू परफॉर्म फंक्शन है या वो पार्शियल है, इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं. ओके, हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 14? Yes, ma'am. Okay. Then, in addition to the circumstances referred to in section 13 or 14, an arbitrator's mandate can be terminated where he withdraws from the office or by or pursuant to agreement of the parties. Where the mandate of an arbitrator terminates, a substitute arbitrator shall be appointed. Unless otherwise agreed by the parties, where an arbitrator is replaced under subsection 2, any hearing previously held may be repeated at the discretion of the tribunal. Unless otherwise agreed by the parties, an order or ruling of the tribunal made prior to the replacement of an arbitrator under this section shall not be invalid solely because there has been a change in the composition of the tribunal. तो ये पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि आप एक आर्बिट्रेटर जो है उसका जो मैंडेट है, मतलब उसका जो अपॉइंटमेंट है, वो टर्मिनेट हो सकता है जब वो खुद अपने ऑफिस से रिजाइन कर दे या पार्टीज उसको निकाल दे. ठीक है, तो जब भी एक पर्सन खुद रिजाइन करता है या पार्टीज उसको निकालते तो उसके जगह पे दूसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है. अब जब दूसरा आर्बिट्रेटर आएगा तो पूरा प्रोसीडिंग्स वापस रिपीट करना है या जहां से खत्म हुआ था वहां से चालू करना है, दैट विल बी टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्राइब्यूनल. ठीक है, मतलब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो डिसाइड करेगा, सपोज 3 जज थे उसमें से एक चला गया, तो बाकी अभी जो नया पूरा बना है 3 लोगों का पैनल, वो डिसाइड करेगा कि पहले से वापस सब शुरू करना है या फिर जिस पॉइंट पे रुका था वहां से शुरू करना है. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, an order or ruling of the tribunal made prior to the replacement of arbitrator. मतलब अगर सपोज जो आर्बिट्रेटर को आप निकाल रहे हो उसके पहले कोई रूलिंग या ऑर्डर दिया था, ठीक है, वो अभी भी वैलिड रहेगा, आप उसको इनवैलिड नहीं बोल सकते. जस्ट बिकॉज एक पर्सन को निकाल दिया या एक आर्बिट्रेटर को सब्सटीट्यूट कर दिया, उसकी वजह से जो पहले के ऑर्डर और रूलिंग्स थे पहले वाले आर्बिट्रेटर के, वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो अभी भी वैलिड रह सकते हैं. ठीक है, आई विल रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश अगेन, बट हैव यू ऑल अंडरस्टूड दीज 4 पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so what I'm trying to say here is, see, we already have studied that a particular arbitrator can resign from the office or the parties can remove that arbitrator. So where an arbitrator has resigned or removed, he will be replaced by another arbitrator. This is said in the second point. In the third point, they are saying that wherever an arbitrator is replaced and a new panel is formed, okay, so suppose say earlier Sayoni, Sakshi and Shruti, Sayoni, Sakshi and Shruti were the arbitrators. Okay, Sayoni, Sakshi and Shruti were the arbitrators. Shruti had to be removed from the office, or Shruti was removed by the parties. Okay, on 1st June 2021. Okay, then say Tarun was added to the panel. Now the new panel is Sayoni, Sakshi and Tarun. Now these three will decide that whether we have to start the case afresh or 1st June 2021 onwards we should carry on the case. या तो पहले से करना है या फिर जहां पे रुका था वहां से करना है. Okay, and the fourth point says that if some order was given before 1st June 2021, it will still continue, it will still be valid. You cannot say that that particular order is invalid only because a particular arbitrator had to leave the panel. Just because Shruti was removed, just because Shruti had to leave for certain reason, doesn't mean that whatever order was given before her removal will be invalid. It will still be valid. Okay, have you all understood all the 4 points? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay,
competence of arbitral